सोरेन कीरकेगार्ड एक डैनिश फिलोसोफर और थियोलॉजियन था जिसने अपनी किताब अब बिल्डिंग डिस्कोर्सेज एंड वेरियस स्पिरिट्स 1847 में पब्लिश की, जिसमें एक हमें छोटा सा ऐसे मिलता है बाय द नेम द क्राउड इज़ अनट्रुथ, जो द क्राउड की पावर और स्पेसिफिकली द पावर ऑफ द प्रेस के बारे में बात करते हैं इस टाइम। कीरकेगार्ड की नज़र में द क्राउड इज़ अ सोर्स ऑफ ओनली डिसेप्शन एंड अनट्रुथ। उसका मानना है कि ये इंडिविजुअलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सख्त खिलाफ है, एंड इट इज़ ड्रिवन बाय अ डिज़ायर फॉर कंफॉर्मिटी, फॉर कंफर्ट एंड फॉर सिक्योरिटी, और ये स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को अपने आप से, अपने ट्रू सेल्फ से दूर करता है। वो किताब में लिखता है, देयर इज़ अ व्यू ऑफ लाइफ विच होल्ड्स दैट वेयर द क्राउड इज़ द ट्रूथ इज़ ऑल्सो, दैट इट इज़ अ नीड इन ट्रूथ इट सेल्फ, दैट इट मस्ट हैव द क्राउड इन इट्स साइड। देयर इज़ अनदर व्यू ऑफ लाइफ which holds that wherever the crowd is, there is untruth, so that for a moment to carry the matter out to its farthest conclusion, even if every individual possessed the truth in private, yet if they came together into a crowd, so that the crowd received any decisive, voting, noisy, audible importance, untruth would at once be let in. Kierkegaard crowd को और basically masses को, any group of masses को सिर्फ एक सोर्स ऑफ अनट्रूथ की तरह देखता था, जो एक इल्यूजन ऑफ यूनैनिमिटी क्रिएट करते हैं, और वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के लिए काफ़ी मुश्किल बनाते हैं टू एक्सप्रेस देयर ट्रू ओपिनियंस एंड बिलीव्स, और इससे वो कहता है सिर्फ डिसेप्शन और झूठ ही पैदा हो सकता है। द क्राउड नॉट ओनली क्रिएट्स अ फॉल्स सेंस ऑफ यूनैनिमिटी बट ऑल्सो अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, वेयर इंडिविजुअल्स आर नॉट फोर्स्ड टू कन्फ्रंट द अनसर्टेनिटीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एग्जिस्टेंस। कीरकेगार्ड का मानना था कि दिस क्राउड लीड्स इंडिविजुअल्स अवे फ्रॉम देयर ओन सेल्व्स, फ्रॉम देयर ट्रू सेल्व्स, बाय क्रिएटिंग अ फॉल्स सेंस ऑफ आइडेंटिटी एज वेल। ये इनकरेज करता है इंडिविजुअल्स को कि वो अपने आप से नहीं लेकिन एक ग्रुप से आइडेंटिफाई करें, और उनकी आइडेंटिटी उससे क्राफ्ट होगी रादर देन विद देयर ओन इंडिविजुअलिटी, और ये आइडेंटिफिकेशन जो एक ख़ास ग्रुप से होगी ये इनको लीड करेगी टू अडॉप्ट बिलीव्स एंड ओपिनियंस दैट आर नॉट देयर ओन, and to suppress their own individuality in favor of the group's beliefs. अब यहाँ पे कीरकेगार्ड की फ़िलासफ़ी का एक कोर कॉन्सेप्ट बीच में आता है, वो है कि द ट्रुथ इज़ सब्जेक्टिव ऑलवेज। कीरकेगार्ड ने काफ़ी स्ट्रेस किया इस बात पर इन मैनी ऑफ हिज राइटिंग्स, फॉर एग्जांपल इन आइदर और इन स्टेजेस इन लाइफ्स वे सॉरी। और उसका मानना है कि हर इंसान जो है, हर इंडिविजुअल जो है, दे मेक देयर ओन चॉइस as to whether they'll select the truth or falsehood, whether they'll select the aesthetic life or the ethical life or the religious life, और वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर फ्रीडम फाइंड करते हैं, और इसकी वजह से उनका जो ट्रूथ है वो हमेशा सब्जेक्टिव रहता है। और यहाँ पे इट्स इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि कीरकेगार्ड वॉज अ क्रिश्चियन, ही वॉज अ थियोलॉजियन फर्स्ट एंड देन अ फिलोसोफर और अ पोएट। वो अपने कामों में जनरली और इस ऐसे में स्पेसिफिकली भी पर्सनल सोल या स्पिरिट के ऊपर एम्फसाइज करता है एंड इट्स रिलेशनशिप विद गॉड। यानी वो एम्फसाइज करता है कि एवरी सोल फाइंड्स गॉड थ्रू इट्स ओन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, और इसका जो ये ट्रूथ होगा, जो कल्टिवेट होगा इसके अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, वो उसके लिए सही होगा और उसके लिए इट विल मेक सेंस, और इसके लिए कोई सिस्टम नहीं है जो आप फॉलो करोगे ड्यू टू विच यू विल चूज़ one thing over the other, either truth or falsehood, either the aesthetic or the ethical or the religious. तो उसी तरह कीरकेगार्ड का मानना है कि the truth is always subjective, और जहाँ भी एक ग्रुप बनेगा मैसेस का या इन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स का, वहाँ पे इनके सब्जेक्टिव ट्रूथ्स डिस्टॉर्ट हो जाएंगे एंड ओनली अनट्रूथ विल इमर्ज आउट ऑफ दैट, एंड दैट इज़ व्हाट ही इज़ एसेंशियली सेइंग। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि द क्राउड्स प्रोड्यूस फॉल्सहुड, बट द केस इज़ दैट even if every individual possessed the truth in private, if they came together into a crowd, untruth would at once be let in. That is, जो crowd have it by its very nature it turns truth into untruth. अब इसके वो दो reasons पेश करता है. The first one has to do with epistemology. Unless a crowd has amassed around the most general beliefs, such as beliefs with little information or little specific intention, it must be the case that in the averaging of conceptions which permits individuals to join the crowd, एक enormous information loss होता है, और हर individual जो है इस crowd में they have in their mind a valid idea with meaningful complexity,
बट द क्राउड कैन नॉट हैव दैट. इन मेंबर्स एंड इंडिविजुअल्स के बिलीव्स में जो वेरिएंस होगी वो या तो एवरेज आउट हो जाएगी इनटू अ मोर और लेस अनट्रू जनरल आइडिया, या फिर क्राउड फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि इन सब के कंसेप्शंस, इन सब के ओपिनियंस और बिलीव्स को या तो एवरेज आउट होना पड़ेगा या फिर यूनैनिमिटी पैदा नहीं हो पाएगी. तो क्राउड जब फॉर्म होता है तो बाय इट्स वेरी नेचर मेंबर्स के कोर बिलीव्स आर डिस्टॉर्टेड इनटू at least a lesser true truth, and it becomes soon an untruth. जो दूसरी रीज़न किरकेगार्ड पेश करता है वो थोड़ी सोशल या साइकोलॉजिकल है, यू कैन से. ये जो क्राउड है बाय इट्स वेरी नेचर ये हर इंडिविजुअल का स्टेक इन द एक्यूरेसी ऑफ बिलीव्स और द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ आउटकम्स इसको रिड्यूस कर देता है. बिल्कुल ऐसे ही जैसे इन इंडिविजुअल्स की अथॉरिटी को वो रिड्यूस कर देता है दैट दे हैव to influence these things. They not only permit but mandate and require a kind of deference या फिर agreement to the averaged beliefs which unite them. तो by its very nature जो individuals हैं इस crowd के, it would be very costly and very ineffectual for them to seek to change what crowds think. और जैसे ही वो ये करते हैं, जैसे ही they seek to change what crowds think, they are not part of the crowd anymore and they incur its wrath. These crowds by their very nature make individuals cowards in order to generate their power. क्योंकि they only have power precisely because its individuals have ceded their power to vary, to contest, to refute, to iterate their knowledge. वो लिखता है, for to win a crowd is not so great a trick. One only needs some talent, a certain dose of untruth, and a little acquaintance with the human passions. But no witness for the truth dares have dealings with a crowd. The witness for the truth, who naturally will have nothing to do with politics and to the utmost of his ability is careful not to be confused with the politician, is to have dealings with all, if possible, but always individually, to talk with each other privately on the streets and lanes, to split up the crowd, or to talk to it, not to form a crowd, but so that one or another individual might go home from the assembly and become a single individual. A crowd, on the other hand, when it is treated as the court of last resort in relation to the truth, its judgment as the judgment is detested by the witness to the truth, more than a virtuous young woman detests the dance hall. And they who address the crowd as the court of last resort, he considers to be instruments of untruth. We warn young people against going to dens of iniquity, even out of curiosity, because no one knows what might happen. Still more terrible, however, is the danger of going along with the crowd. In truth, there is no place, not even one most disgustingly dedicated to lust and vice, where a human being is more easily corrupted than in the crowd. Kierkegaard यहाँ पे कह रहा है कि to win a crowd is no art. आपको सिर्फ untruth चाहिए, आपको nonsense चाहिए और आपको थोड़ा बहुत knowledge चाहिए of human passions. लेकिन कोई भी इंसान who is a genuine seeker of the truth, a genuine supporter or a witness to the truth, will not dare get involved with the crowd. So that is what Kierkegaard essentially says in this short essay, जो कि I think so 10-15 pages का, you can easily read it, and if you're interested in learning more, you should check out The Crowd by Gustav Le Bon, which goes into greater detail, जिसके ऊपर मैं पहले से एक वीडियो कर चुका हूँ on my channel.